ब्रेक के बाद फोकस लाइव सीजन 4 में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। मैं विकास नांगिया। दर्शकों, आज लगातार हम बातचीत करते चले आ रहे हैं यूक्रेन रशिया क्राइसिस के दौरान कुछ प्रतिष्ठित संस्थाओं के वॉलंटियर्स के साथ जो इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने में मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ स्थानीय रेफ्यूजीज की भी मदद कर रहे हैं। कार्यक्रम के इस भाग में हमारे साथ सेवा इंटरनेशनल के 2 वॉलंटियर्स जुड़े हैं जो यूरोप की तमाम गतिविधियों की, यूरोप की तमाम एक्टिविटीज का कार्यभार संभाले हुए हैं। हमारे साथ हिरम कुलकर्णी जी फिनलैंड से जुड़ रहे हैं और सूर्या मणि जी इस वक्त स्वयं यूक्रेन में हैं। इन दोनों वरिष्ठ वॉलंटियर्स के अतिरिक्त हमारे साथ 2 इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं जो इस वक्त यूक्रेन से भारत वापस लौट चुके हैं। हमारे साथ तान्या शेखर हैं, पटना बिहार से जुड़ रही, और साथ में शौर्या रॉयल जी हैं। शौर्य जो है इस वक्त तिरुपति में है। आप चारों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करना चाहूंगा सूर्या मणि जी आपसे। इस बात का इत्मीनान है कि इस वक्त आप स्वस्थ हैं, सब कुछ कुशल लग रहा है, लेकिन तनावपूर्ण परिस्थिति है और आप खासतौर पर अभी भी यूक्रेन से बाहर नहीं गए हैं, आप यूक्रेन में ही हैं। कुछ वहां का इस वक्त का माहौल क्या है, कुछ परिस्थिति क्या है, उसके बारे में हमें बताइए। सभी आपके दर्शकों का अभिनंदन। यहाँ की अभी जो स्थिति है, वो जो वर्तमान स्थिति है, युद्ध काल में जो स्थिति होती है वो स्थिति है। वो सायरनों का बजना, हमेशा ऊपर से फाइटर प्लेनों का गुजरना, कहीं कहीं पर बमबारी होना, अस्त व्यस्त जीवन, लोगों में दहशत का माहौल, वो युद्ध की वो भयावह जो रूप है लोगों के सामने उपस्थित होना, ऐसा ही है। बस युद्ध की जो होती है अवस्था, उस अवस्था में सारे लोग यहाँ पर जी रहे हैं। जहाँ पर कम है ये बमबारी, वहाँ पर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपना जी रहे हैं, किंतु जहाँ पर बहुत ज्यादा बमबारी है वहाँ पर तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत लोग पलायन कर रहे हैं, छात्र पलायन कर चुके हैं, और भी जो स्थानीय लोग हैं वो भी पलायन कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने जितना सहायता किया और आगे भी कर रहे हैं, हम लोग सभी मिलकर, हिंदू स्वयं सेवक संघ और सेवा इंटरनेशनल यूरोप दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। जी, Shaurya and Tanya, I'd like to reach out to you and then I'll reach out to Hiram ji. Shaurya, could you just tell us what was the situation when you left Ukraine and how did you manage to reach back to Tirupati? And then Tanya, the same question to you. Well, sir, the situation when I was leaving Ukraine, it was very tough. The bombings, shellings, and fire shots, everything was going on, and the people were very scared. Basically, the panic was everywhere. We can sense the fear in the air also. It was so horrible. And first on March 1st, we started our journey from Kharkiv, and we reached a railway station. From there, we took a train to Lviv, and from there, we took a bus to Chop, that's the Ukrainian border to Hungary, and then we reached Zohany, and from there, Indian embassy officials met us. They talked to us, and they also gave us food, water, and everything. After that, they gave us the train ticket to Budapest. And from there, again, various organizations like Sewa or different organizations helped us to get inside the bus, and they safely got us into airport. So what was the overall duration of your journey when you started from Kharkiv? I started on March 1st, early morning, and I reached Budapest on March 4th. And later I also got the flight, which was around, I guess, 8 to 9 hours flight. And finally, I reached Tirupati on March 6th. Tanya, can you walk us through how tough and challenging it was for you to move out of Ukraine and to reach back to Patna, Bihar? Yeah, the situation was pathetic. In one word, if I would like to describe my situation, it was pathetic. And it got worse when we were starting hearing the sirens. That was the first alarm when the situation became worst. And then after that, we have to go to the bunkers. And then me and my group and whole student, we decided to take a bus
which will reach to the border. And after taking bus, we have to go for 15 kilometers to reach that border. And then the main situation and when the tough time began, when we have to stand for more than 24 hours in a line just to cross the border, and the situation became a little okay, or maybe a positive one when we crossed the border, the Romania border, and then the accommodation and food was provided by the organization. So, but yeah, the situation was, it was a something that I don't want, I can't forget through my lifetime. Correct, correct. I'll reach out to both of you in a moment, but let me reach out to Hiramji. Hiramji, can you talk about the support that was given to the Indian students and the refugees by Sewa International? What all places did you guys organize the camps, and what kind of support did you guys lend to these individuals? Sure, Vikashji. Dhanyawad. Sewa International, with a motto of service before self and selfless service. This is a motto through which we work on. And with this motto, we first, when we got to know on 24th of February that this kind of thing is coming to Ukraine, immediately we got in touch with our Karyakarta and volunteers on the ground in Ukraine with Suryamaniji and as well as all other team members. We got to know that the biggest problem that what we found in the first 24 hours is a misinformation or lack of information. So we, within 24 hours, we set up a helpline with 350 volunteers working together 24/7 to collect the information from different cities of Ukraine and from the borders and giving that information to individual students. We created a form through which we got till date, we got more than 6,500 requests, which covers more than 35,000 individuals, and as well as through which we could be able to mobilize more than 12,500 students from different cities of Ukraine towards the border and their safest evacuation to the 4 other countries, including Poland, Hungary, Romania, through Moldova, and as well as through Slovakia. So these are the areas through which we did. And the biggest support actually from our side, in fact, we understood that in the initial few calls, we got to know that first there is a lot of chaos, misinformation. So we just first give a support to them that, okay, please don't worry, we are with you. You are not alone. We could be able to sense that the students are in the bunker. They were not been able to approachable only through the mobile call. So we had to call them through the multiple options, which we did. And then the next part was asking them to move out from the safe zone, follow the embassy guidelines, follow the local guidelines of the officials, and then moving them to the train station or to the bus, giving them safe transit towards the border, and at the border giving them support. After they go out of the border, we have more than 100 volunteers on the borders, and as well as we have 100 volunteers in Ukraine to support this entire evacuation process. अभी हम लोगों की दीर्घकालीन जो नीति बनेगी उसमें हम लोग देखेंगे जो शरणार्थी हैं जो रहते हैं यूरोप में, उन्हें हम लोग वहां पर क्या सेवा दे सकते हैं। ये हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आपके जो दर्शक हैं उन पर निर्भर करेगा कैसा वो हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। जो लोग हैं वो सभी ढेर सारे घटकों का ये जो मिलन होगा उससे एक फल की प्राप्ति होगी। बहुत निर्भर करता है ये समाज कैसा इसका हम लोगों का प्रोत्साहन करेगा। ये तो हमारी दीर्घकालीन योजना में है। उनके लिए रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्था तो हम लोग कर ही चुके थे जब यहाँ पर युद्ध काल की स्थिति थी, विपदा की स्थिति में। आगे भी हम लोग करेंगे। सिर्फ सामर्थ्य, जितना सामर्थ्य है यथासंभव हम लोग अपना योगदान देंगे जी। और तत्काल तो मैं पश्चिमी यूक्रेन में हूँ, जहाँ पर कि लोगों को पलायन करने में हम लोगों ने यथासंभव सहायता प्रदान की। यहाँ पर रोमानिया की सीमा मिलती है तो रोमानिया के द्वारा लोगों को भेजा गया। पोलैंड की सीमाएं मिलती हैं, वहाँ पर भेजा गया। तो जहाँ पर हमारे स्वयंसेवक हैं उन्होंने अपना जो यथासंभव सर्वोच्च सहायता प्रदान किया। हम लोगों ने प्रथम दिन ही, जिस दिन ही बमबारी हुई, प्रथम दिन ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सही सूचना कैसे दिया जाए ताकि ये जो अफरा तफरी का जो माहौल है वो कम से कम शांत हो
हमारे माननीय हैरम जी थे, अंकुर ताड़े जी थे, दीपा ताड़े जी और समस्त टीम, बहुत बड़ी टीम है हम लोगों की, लगभग 350 इसमें स्वयं सेवक लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने पहले एक हेल्पलाइन दिया, हम लोगों ने गूगल पर फॉर्म किया, उसे हम लोगों ने लोगों में वितरित किया, उसमें मीडिया ने भी बहुत हम लोगों का साथ दिया उसे वायरल करने में। 6000 से ज्यादा लोगों ने उस फॉर्म को फिलअप किया। हम लोगों ने सूचनाबद्ध तरीके से लोगों को बोला कि आप अपने जगह पर रहिए, जहां पर सुविधा हमारे स्वयं सेवक उपस्थित थे वहां पर उन लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई गई, पानी की व्यवस्था कराई गई। जहां हमारे स्वयं सेवक उपस्थित थे उन्हें वाहन दिया गया और भी बहुत ढेर सारे ऐसे कार्य को हम लोगों ने अंजाम दिया। Shaurya and Tanya, I'd like to reach out to you. Out in the news, we were also listening the situation where Indian students had come up mentioning that there was a moment of discrimination because everybody was running around and Ukraine citizens were given preference over individuals who were not who are of other countries. Was that the situation with you folks as well, Shaurya? So as soon as the war started on 24th of February, we were very panicked and we just got inside the bunkers. Fortunately for us, in our case, we were living in a house which already had a bunker. We were not aware of that, but our landlord was very good. So she said, you guys can stay over here, and if any help you guys need, just ask me. Don't be shy. And so we were inside the bunkers for around 4 days, I guess. And we were also struggling with groceries, water, and everything. But somehow we managed it. And regarding the part of Ukrainians getting more preference than other foreign citizens, I guess there is no discrimination. I would say that the entire, crowd was filled with panic as it is a war zone. And if anything goes wrong, the first people who are targeted will be Ukrainians, not the foreigners. So I guess that was not discrimination. I would not consider it as discrimination. Yes, sir. किस तरह की तैयारी है आप लोगों की आगे सेवा इंटरनेशनल को लेकर के, किस तरह से सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग नजदीकी स्तर पर यूक्रेन रेफ्यूजीज के साथ काम कर रहे हैं? जी हाँ विकास जी, so Sewa International is looking forward to see what is happening on the ground, or as every human being and humanity expects that this thing will get settled down as soon as possible. But whatever happens, we are ready and we are in process to plan the next steps in this entire Ukrainian crisis. So we are we are trying to get into the different borders right now, because still there are evacuations are happening. There are refugees coming out of the borders. And the biggest problem right now that in these 4 countries, in Poland, Romania, in Hungary and Slovakia, you will find thousands and hundreds of thousands people are on the street and they are moving towards the Europe. So one of the area what we are right now working is first set up the information centers in these different areas where they will get right information. Second important part, we are working with various our partner organizations where we can be able to help the city councils from various organizations and various cities from countries to set up the support center, including accommodation, shelter, food, and so on. So that's our second area of work. Third important area is most of the students who are coming out of the Ukraine part, they are Ukrainians, they are the school-going students, they are the university students. So how we can be able to support them once they come to any other country? So because Sewa International Europe has a wide network of volunteers and we really promote the volunteering approach. हमने सिर्फ भारतीय मूल के स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं, लेकिन विश्व के 12 देशों से ज्यादा जो नेशनलिटीज है उनके साथ इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हमने काम किया.
Example, we were working with His Excellency, the Ambassador of Nigeria to Ukraine, and with Nigeria, Namibia, Rwanda, South Africa, Egypt. These are the countries whose students were already trapped in Sumy, which was a very tough city to get out. So we started working with them, and we are really happy that more than 470 students from African origin, we could be able to evacuate them. We could be able to get them out of the Ukraine within 24 hours. Once they came out of the Sumy, we could be able to arrange a transportation as well as train back to the cities. Now, also there is also one more part which is right now still working on. There are some students still left in Kherson as well as some other part. So we are also supporting them. So as we say, Vasudhaiva Kutumbakam is a basic idea behind how we Bharatiya stay as well as how we all जैसे विचार करते हैं उसका ही ये प्रारूप है हमारा काम। जी सूर्य जी, ये ईश्वर से कामना कि आप वहाँ कुशल रहें, स्वस्थ रहें, यूक्रेन में हैं। चलते चलते आपसे यही कि आप प्रवासी भारतीयों को कुछ कहना चाहेंगे जो इस इंटरव्यू को नॉर्थ अमेरिका में देख रहे हैं, यदि किसी तरह से वो आपका सहयोग कर सकते हो यहाँ से बैठ करके, कोई खास संदेश उन्हें देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कामना करूंगा जो प्रवासी भारतीय अपने अमेरिका में हैं कि वो जहां भी रहें अपने कर्म भूमि के प्रति समर्पित रहें। वो जहां भी जाएं, वो जो हमारे प्राचीन परंपरा है भारतवर्ष की, हमारे आनुवांशिक गुणों में कोशिकाओं के स्तर तक निहित है वसुधैव कुटुंबकम, उसे वो जनमानस के बीच में वो प्रचारित प्रसारित करें। जो भी हमारे शरण में आता है, वो जो हमारी भारत की प्राचीन परंपरा रही है, शरण में आने वाले को हम लोग अभयदान देते हैं। क्षमता अनुसार जो भी कर सकते हैं हम लोग करते हैं, और आशा करूंगा कि वो इस वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उसका वो आत्मसात करें और उस पर उसी पर गमन करें। तो हम लगता है अगर ऐसा करेंगे हम लोग तो इस पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति रहेगी। जब लोगों के अगल बगल में ऐसी अगर व्यवस्था अगर कर दी जाती है तो स्वयं व्यक्ति भी सुख शांति से रह सकता है। इसीलिए बोलते हैं हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, और हम लोगों के पूर्वजों द्वारा ही उद्धृत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद जी, बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छी बात, और इस सकारात्मक सोच के साथ इस बातचीत को खत्म करेंगे। सूर्या जी, हिरम जी, Tanya and Shaurya, thank you all for joining us on this segment of Focus Live Season 4. Stay blessed and stay healthy. Thank you so much. Stay safe.